शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये जो पीरियड है यहाँ पे the seller can change his supply slightly. Periodic wise, like if I say it is from few days to the period of 5 years, from few days to the period of 5 years, then such type of market is short period market. It is short period market, and यहाँ पे the seller can moderately, or we can say slightly change his supply. You can slightly change in supply. यहाँ पे डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा. डिमांड will not change largely. Supply can slightly change. Then the third period of market what we have is long period market. Long period market. Now what is this long period market? तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस मार्केट के बारे में. लेट मी डिस्कस दोस पॉइंट्स विथ यू. जैसे पहला पॉइंट है, इट विल कवर अप द पीरियड which is greater than 5 years, which is greater than 5 years, up to 25 years. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, all factors, that is land, labor, capital, entrepreneur, all factors are variable under this. इसके अंदर seller can change the entire technology of production also. The seller can change the entire technology of production. Thus, in this, the entire business can also be changed. The supply can largely be adjusted. Then, fourth type of market we have is very long period market. Very long period market, that is, some people also call it as secular period market. It is also called as secular period market. The market which is having greater than 25 years period of time. Now, what does economics say? That in this type of market, it is practically very difficult for the seller. It is practically very difficult for the seller to decide what can be the pattern of demand, what can be the pattern of supply. अभी जैसे आज से 25 साल पहले किसी ने ये सोचा नहीं रहेगा कि there can be one concept called as online education. टीचर अपनी जगह पे बैठ के, स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठ के पढ़ाई करेंगे. किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा. अभी हो रहा है. आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूं. अभी एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं ना, और एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू. आज से 16-17 years back, 16-17 years back, when you were born, your parents celebrated and they said that
They are blessed with angels. अभी आज 16-17 साल के बाद में आपके पेरेंट का आपके लिए ओपिनियन चेंज हो गया रहेगा. दे मे नॉट कंसीडर यू एज एंजल. अभी तो आप डेविल बन गए रहेंगे. बराबर है ना. अभी जैसे देखो, आज अभी तो सुबह सुबह क्लास नहीं हो रहा है. पिछले 3-4 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं चल रहा है, एग्जाम्स खत्म होने के बाद से. तो तब से सब लोग आराम कर रहे हैं. सुबह 5 गाली सुन के उठते रहेंगे, तब तक बेड से हिलते भी नहीं रहेंगे. करेक्ट? एम आई राइट क्रिस? देखो एड्रियन बोल रहा है. ओके, जोक्स अपार्ट. ओके, जोक्स अपार्ट, लेट अस कम टू द पॉइंट. दैट इज, ये मार्केट बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं. ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं विच आर अनप्रेडिक्टेबल. 25 years बैक, आज से 25 years बैक जाते हैं, मतलब 1985 के आसपास हो गया. हाँ, नहीं, 1995 हो गया. 1993-94 के आसपास में मोबाइल्स वर इंट्रोड्यूस, बट दे वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ लग्जरी. क्या आज के मार्केट में मोबाइल्स लग्जरी है? नहीं. मोबाइल्स हैव नाउ बिकम नेसेसरीज. इतना ह्यूज चेंजेस होगा मोबाइल मार्केट में, किसी ने सोचा ही नहीं था. So very long period is unpredictable. Thus, it is very difficult for a seller to determine what can be the pattern of demand as well as pattern of supply into such type of market. Okay. Now we go to the next type of market, next classification. The third classification of market, that is C, it is on the basis of transactions. On the basis of transaction. Nature of transactions क्या है उसके हिसाब से. A is called as spot market, or some people call it as cash market. The market where goods and services the market where goods and services are bought and sold for the payment to be made either immediately or in short period of time. Immediate payment या short duration में payment के वक्त में जो goods and services sale किए जाते हैं, then such market in economics shall be referred as spot market. It shall be referred as spot market. तो इसके अंदर दूसरा टाइप होता है
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Forward, or we can say future market. Forward market or future market. Am I clearly audible to you? Can you hear me properly? ओके, थैंक यू, बस हो गया। तो फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट जो होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स, the transactions will involve contract that the payments will be made at some future date. The goods would be delivered. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज धवल पुजारी ने केटरिंग एजेंसी चालू किया फॉर एग्जाम्पल, और उसने बहुत फैंटेस्टिक केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत फैंटेस्टिक फूड प्रोवाइड करता था वो अपने केटरिंग के अंदर। तभी उसका जो दोस्त है हितेन वडामा, वो अभी उसको बोलता है, एक काम कर धवल, मेरा जब शादी हो जाएगा ना, तो मेरे शादी के केटरिंग का ऑर्डर मैं तेरे को दूंगा, जो भी रहेगा मैं तुझको ही दूंगा। यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू अ फ्यूचर डेट, then such type of market would be called as forward market. I can't get your point, धवल सर। इधर भी मैं ही मिला। अरे तुमको केटरिंग का एजेंसी दिया ना, शादी वडामा की कराया मैंने। उल्टा जी गया था, शादी तुम्हारा करवाना था धवल। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस आर रिकॉर्डेड। सब रिपोर्ट होगा प्रिंसिपल सर को। धवल तुम्हारे राज भी इधर खुलेंगे, ऑनलाइन सबको पता चलेंगे। खोलू तुम्हारे राज इधर धवल? नहीं ना? 23rd को बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जगन्नाथपुरी में। 23rd जून को बहुत बड़ा फेस्टिवल रहेगा रथ यात्रा का। इस साल होगा क्या नहीं पता नहीं। हाँ, अभी बराबर बोला धवल। अरे सर मैं क्या किया नहीं, मुझे माफ करो। तुमने ही पॉइंट पकड़ा कि इधर भी मैं ही मिला क्या। मैं तो लेक्चर लेके आगे बढ़ रहा था, तुमने पिन मारा के मेरे को, मैं क्या करूं। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट, on the basis
of regulation. 12th का रिजल्ट आ रहा है 13 जुलाई के आसपास में. एंजॉय करना आप लोग, बहुत मजा आएगा. On the basis of regulation, there are two types of market. A, regulated market. Regulated मतलब क्या? Controlled. Regulated market मतलब controlled market. The market which are working under the regulations, under the control of some authority, under the regulation or control of some authorities, then such market are called as regulated market. For example, stock exchange, stock market. ये जो market है, it is regulated. It is controlled by the authority called as SEBI, Securities and Exchange Board of India. ये उसको कंट्रोल करता है. वही हो गया ना स्टॉक मार्केट में, वही बोल रहा हूँ ना, सेबी कंट्रोल करता है एनएससी को. दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कंपनीज का जो मार्केट है वो भी एक रेगुलेटेड मार्केट है. इंडिया में उसको एक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है. इंडिया में उसको एक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है कॉल्ड एज IRDA, इरडा. IRDA, और अभी आयुष में इंट्रोड्यूस किया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये एग्जांपल है रेगुलेटेड मार्केट. दूसरा होता है बी, अनरेगुलेटेड मार्केट. Unregulated market, as the name says, that this market is not regulated by any authority. It is not controlled by any authority. They are free. This market sometimes is also called as free market. Free market, it does not mean कि यहाँ पे सब free में बेचेंगे. फ्री मार्केट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, फ्री फ्रॉम रेगुलेशंस, नोबडी टू कंट्रोल, नोबडी टू कंट्रोल. एक गपचुप को गोली खाओ और चूरन खिलाऊंगा मैं. फ्री मार्केट, जैसे अपने वेजिटेबल सेलर्स है, फ्रूट सेलर्स है, इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जब चाहिए तब वो लोग अपने बिजनेस चालू करेंगे, बंद करेंगे, उनके मर्जी के हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे. दे आर called as unregulated market. Now we go to the next classification of the market. That is I said example fruit market, vegetable market for that. E, that is on the basis of volume of
business on the basis of volume of business, that is on the basis of transaction. तो इसमें दो तरह के होते हैं, वन wholesale market and two retail market. इसके बारे में आप लोग मुझको बताओ, होलसेल मार्केट मतलब ये कौन सा मार्केट रहेगा, इसका मतलब आप लोग बताओ मुझको।